You may have 1,000 problems in life until you got a health problem. And then you have only one, and everything else fades away in the shadows of it. On contradiction to this statement, there are some diseases where people neglect them as if they don't even care. One of such diseases is hernia. Though it can rarely lead to an emergency, but if it does, then you have to lose part of your bowel by doing resection and anastomosis. Or even it can lead to death of your patient. It is one of the leading burdens of Indian healthcare system. Nearly 20% of the global population has to face the hernia in some part of their life. So, असल में क्या होता है hernia? Protrusion of an organ, tissue, or structure through the wall of the cavity that normally contained it. ये होता है डेफिनेशन ऑफ हर्निया। बट अगर इसको थोड़ा आसान शब्दों में अगर आपको समझाना है तो आपके बॉडी में नॉर्मली रहने वाले ऑर्गन्स अपने कैविटी से बाहर आ जाना थ्रू अ वीक स्पॉट इज नथिंग बट हर्निया। एंड अमंग ऑल दोस टाइप्स ऑफ हर्निया, inguinal hernia is the most common hernia. This is the inguinal canal. यहाँ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इस कैनाल फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं। जब भी इस स्ट्रक्चर्स वीक होना या अपनी abdominal प्रेशर इंक्रीज होना, सो देन आपकी bowel lips या मोमेंटम मोस्ट कॉमनली इस कैनाल से पास थ्रू होंगे वेयर इट कैन लीड टू स्ट्रैंगुलेशन इन फ्यूचर. So then what is the etiology of you getting hernia? Being a male is itself a risk factor for you and increased abdominal pressures and obesity and smoking. Then what is the treatment of this hernia? There is no medical management in this hernia. If the defect is small, either you maintain the defect without increasing it, or else if the defect is large enough, then you have to go for surgery. And finally, how to prevent hernias. Maintaining healthy weight, proper weightlifting techniques, strengthening the core muscles. Because at the end of the day, if your muscles are weak enough, then no one can hold your herniation back there. And avoid straining during your bowel movements and treating any chronic cough and chronic sneezing conditions. Last but not least, smoking can also lead to herniation, as proven by studies. तो एट द एंड अगर आपको हर्निया होगा तो प्लीज डोंट नेग्लेक्ट इट, क्योंकि इफ इट लीड टू कॉम्प्लिकेशंस देन इट कैन बी योर एंड. सो अगर आपकी नोटिस में कोई हर्निया की वजह से सफर हो रहा, ना ना, अगर कोई हर्निया के रहने के बावजूद इसको नेग्लेक्ट कर रहा, तो उन लोगों से इस रील को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर वो सफर हो रहा तो वो खुद हॉस्पिटल चला आएगा.